Hey, hi Paresh, good to see you. Paresh, what is the time at your place? It's 8:30 p.m. Three? Three? 8:30 p.m. Okay, in the evening. Okay, great. evening, yeah. So that is when I'm thinking like you have joined. hmm What should be the time? So, sir, while you are waiting for others, Mhm. actually, I want to learn Java, Java. I want to learn as well as what we are doing Spring Boot as well. Like I am good with like understanding basic Java and all, but it's good to having more knowledge from Detailed you. understanding. Exactly, exactly. Yeah, yes, yes. So Understood. like yeah. So that's Tomorrow, the you reason I am joining. Yeah. no problem, no problem. Tomorrow you will get an update like how you can be the part of whole end-to-end training program. Hmm? Okay, okay, Yep. So as of now, focus on day two. We'll be covering few next important concepts, and that okay, will again help you okay. Thank you. to gain some knowledge. Yes. Yeah. All right. Meeting everybody. Can chat, rename, cannot set meeting timers. All right. Good to see you, Anaga. Collaborate with Zoom, share notes, share file, share docs is fine. Okay. We'll get started. I'm opening my PPTs. Just a second. Day two. So today we'll be discussing about data types. The whole agenda will be on covering the data types. It will help you to grow in your future. Here I go. I'm sharing my screen. We need Eclipse as well. So what I'll do, I'll share my full screen itself. Yes, I hope you are able to see the screen. Can you please confirm into the chat? Yes, thank you so much for the confirmation, Paresh. Okay. So we will be discussing about data types, a very important part of Java. Before we get started with actual coding, you need to understand how to create variables, where to store the data, and some memory related operations. So in Java, we store some data in stack, some data in heap, and what exactly it will be, we are going to see today. So there is one more important concept called as typecasting, which helps us to convert one type of data into another. Okay, so that is also we are going to see. Okay, so let's get started with today's agenda. Okay. So we'll understand the variables, we'll learn data types, typecasting. So there are again two types into typecasting, implicit and explicit. We have memory management, stack versus heap. We will be seeing the difference. If I create variables, it goes to stack. If I create methods, it goes to heap. And then there are a lot many differences we are going to see in detail. And some application where we can use these things. And then we'll move towards coding examples and Q&A. Okay, so that's the whole idea behind today's session. All right, let's get into it. Hmm? So when you want to start with coding, first you have to create a variable wherein we will store the data. Okay, like, so variable is just a name that is given to the memory location, but actually your data will be stored at some memory location. Now you might have seen this very uh, famous example, whether you have learned in college or wherever you are. So like this is a memory. Hmm? This is going to be a memory. So can I make a box directly? Let me check here. Do we have something like that? No, I don't have it. Spotlight eraser नहीं है मेरे पास. ठीक है. Dock toolbar. ठीक है नहीं है. ठीक है. So that is when I'm making it with my hands, and I'm not good at it. So just bear with my drawings. Okay. So this is the whole stack and of the memory, and it has multiple parts. Okay. Now this is 0 0 0 1. Okay, you imagine there are three zeros behind it, besides it.
This is 01, this is 02. The location actually I'm talking about. Okay. This is 03, this is 04, and this is 5. All right. So what happens when you want to store the data, it always gets stored to the memory location. The memory location is represented by 0000h. Okay, h stands for hexadecimal. Okay, that's how memory location gets uh, that is the location of the memory. It represented by 000h or 8080h or whatever, it's 4 digit of number and then h after that. That is how memory location is given the number in the operating system or into the system, computer system. Now, when I'm going to create a variable of Java, wherein I wanted to, the use of variable is to store the data, but data won't be stored in the variable. Data is going to stored in one of the memory location, somewhere here or somewhere here, wherever the place you will choose. It will get stored there. Now, what you have to do is, okay, so what you're supposed to do is, you what here in Java we are trying to give it a name like 000h. No, I don't want, I will not, as a human being it will be very difficult for me to remember the number कि अगर मेरे को एक string लिखना है सर, that is suppose 25. Okay, so 25 is the number I want to store. If I store it in 00003, it will be very difficult for me to understand and recall later जब मेरे पास बहुत सारे variables होंगे, right? It will be very difficult. So what I'll prefer instead, to give it a name. Now when I'm creating age is equal to 25, so age is just a name given to this particular memory location. For example, तो ये memory location जो 00002h है, so इस memory location को I just given a name, that just a name given to this location, and my 25 value actually getting stored here somewhere. So it is getting stored somewhere here. Okay, that 25 is stored inside it. So that's how memory variables are created. That's how the variables are managed into the Java. Okay, so every variable Java has a data type again. Now, what type of data I'm trying to store in that memory location will be defined by the data type. Now, this int is a data type, string is a data type. Now, there are multiple data types we are going to see in detail, and then types, and then there are a lot of things. Now, what is data type? It's a type of data that I want to store in that variable, and at the end it in that memory location. So what it signifies? It signifies if I store a number, or if I want to store a number, I'll be giving a data type as int. And in future, if I want to store anything in this variable, I want to replace something, so it will be always in the numerical format. It will be always in the integer format. Once I initialize, or once I assign a data type as int to this variable, forever till the time the code is running, it will only have the integer value. You cannot change it. You can change the value of the variable, like 25 can be replaced by 30, can be replaced by 90, can be replaced by any number, but it should be number. Okay, I cannot replace it by any other type of data. Like I cannot put string over there, not possible at all, not possible in Java at least. Okay, so Java is statically typed. Okay, statically typed means it's a once data type is defined, that is fixed, you cannot change it. Okay, then there is some other programming languages available in the industry like JavaScript, and then we have Python, we have TypeScript. So those are dynamically typed programming languages, wherein if I create a variable of type integer first, on the next line I can assign a string to it. But that is not possible in Java, because this is how Java is built. Java is statically typed. Once the type is defined, forever the type will be the same. The data type that Java is expecting, that variable is expecting, we have to put the same data type. If I try to update with new text, it won't work. Okay, and you must declare a variable before the use. This is another. This is why it is statically typed actually. So before you use this variable, like if I want to use age somewhere to check my condition, if age is greater than, for example, 18, I wanted to check whether you can vote, right? We have a voting system in India.
wherein only after 18 years of completion you can cast your vote. So if I want to build that program, I first have to initialize the variable. Like I want to check the condition and the age variable in that condition. I first have to initialize it with some default value. Now, when you do not assign any value, it won't work. I have to initialize it as 0 if you do not have any value in mind. Okay, so that initialization, that is initialization actually. The declaration. Okay, so if I do not initialize, by default the default value will be 0. Okay, what you could do, some here I'll show you the initialization. There is difference between declaration of the variable and initialization of the variable. These are again two important concepts people will ask you when you're appearing for the interview as a fresher. Okay, not for the experienced guys. So this is very basic fundamental concept, but you need it. Okay, so if variables are used everywhere, we are going to see how to take user input, right? So we'll wait for this. So whatever user will put in the form, we will collect that data and we'll store it in a variable. Suppose I'm asking user for the name I'll be storing in that particular variable, and this variable I'll be using for all my further operations. Okay, so that is how we are going to use variables in Java. Everybody clear till this? We are going to move towards a technical part, which is implementation part, once we are done with some basic fundamental understanding. Yes, Paresh said yes, Ananda said yes. Perfect. Chalo, I'm moving forward. Let me erase whatever I created. So कैसे erase करते हैं? Just a second. So I never tried this thing. I tried it for the first time or second time at least. So normally what I do is I go to the program and then directly from there we do. But the theoretical part is important since you're beginning, getting started. For experienced candidates, they might not need क्या ही है किधर भी स्टोर हो जाए अपने क्या है ठीक है चलो आई एम मूविंग फॉरवर्ड रियल वर्ल्ड एग्जांपल नहीं इरेजर खत्म नहीं हुआ क्या एक सेकंड को जस्ट अ सेकंड इसको कैसे बंद करें ऐसा now I can move forward. Yes. So data types. Now we have seen what is variable. Now we are moving towards data types. Okay. So data types में there are two categories. We have primitive data types, which is byte, short, int. देखो small int है. तो non primitive में वो capital integer होता है. Capital integer. So byte, short, int, long, float. So I will see the examples of each of them. Don't worry. It just that these are the names of it. Okay. Float, double, then character. If I want to store string is non-primitive string where it is a combination of multiple characters. If I want to store only one single character, it comes the data type of that particular thing is different, which is char, and it is a primitive data type. Okay, and then we have boolean. Okay, now the primitive data types are directly stored in memory. Okay, so like whatever memory I have shown you a few minutes back, so that memory is used for storing these primitive data types. Now there is something called as non-primitive data types. Non-primitive data types are stored in the format of string, array, classes, interface, and then we have for every one of them we have non-primitive version of it. Like for int we have integer. For long we have long with L capital. This thing you will observe in Spring Boot as well when we are going to create the entities and everything repositories. That time you will observe this thing. Okay, so this is what we have in. So for boolean as well, if I make capital B and I write it boolean, it will be a non-primitive data type. Now what is non-primitive data type? The data in non-primitive data types is stored in the objects. Okay, not directly in the memory, and that object is pointing to the memory location. Okay, so and references point to the memory location. Okay, so object is stored, data is stored in object, and object is actually stored in memory, not direct the data. Okay, so that's what the difference between this. Like primitive is like first level of thing, which is directly the data is getting stored in our memory. So now in non-primitive we store the data in objects, and that objects get stored into the location. Okay, we'll see the detailed example of everything, don't worry. So here is example. So int. Okay, so this is for primitive data type. Salary, like we have salary is an integer data type. So this is number. So if I want to create a float, okay. So now there is something called as double and float. Okay. So in order to distinguish and identify, it is a standard practice wherein people use F or directly number. So F stand, if I put this is a decimal pointer. If there is no decimal, if it is full number, it is going to be int.
Okay, if I have decimal thing, in decimal we have two things in Java, float and double. Okay, so if I want to create a float, I can do it like this. Float variable name equals to, this is a assignment operator. This is the number 18.5. Okay, so this is the number, and F added extra to represent it as float. Then if I want to store only character, see, I have shown you like string is equal to I am learning Java, right? This is a whole string. But if I want to store only I, then that I cannot store, or I can store in string, but it is not recommended to do so. In Java, we have separate data type, character, char. So we will be storing the single character into a char data type. Okay, then we have Boolean type of data. It can be true or false only. So that is what we have, the basic data types in Java. Okay, we'll see the examples of each and everything. Don't worry. Good to see you, Sandesh. So here is a primitive and non-primitive. In detail, we'll understand what exactly I was talking about. Okay, because until unless you don't understand कि ये exactly क्या है, so we have just seen कि what all things fall under this category, what all things fall under this category. Now we'll see it in detail with example, with what do you say, with default value and few other things. Okay, and I'll tell you what is use of it, why we are using non-primitive data types, and when it where it is required. Okay. So as we already discussed point number 1 and 2, I'll just again reiterate. So storage. So primitive data type stores actual value directly into the stack. Now here is the difference. Okay. So we are going to see this stack and heap again in the next slide. But as of now, just try to understand the terminologies. Okay. So primitive data type stores value directly into the memory. Now stack or heap both are in memory. As of now, do not differentiate between memories. It's memory only. Stack उसमें भी दो categories है, stack and heap. So we will see कि कौन सा चीज stack में जाएगा, which will go to the heap. That we will see. So stores actual value directly in the memory is what primitive data types does. Now non-primitive data types, what it does, it stores the references to the object. Now in non-primitive, we do not store the value directly. We store the references to the object of the data. Like in our objects, data is stored, and object ka reference, we are storing it into the memory. That's what we do in non-primitive. So examples we have already seen. The basic data types fall under primitive. Then we have string, array, where it is collection of data. Okay, string is a collection of characters. Array can be the collection of integer or any other things. Classes is nothing but a whole bundle of multiple variables, multiple methods, and all of the things. Interface is again an abstract implementation of the classes. So these are the objects actually. Like whenever we are trying to store more data, what we do, we use non-primitive data type. If I want to store a single value, I prefer primitive data type where that value directly goes and stores in the memory. What is the challenge? Now, if I create primitive data type, I cannot have the value as null. By default, there will be some value. If I create int, now I will come back to this point again. The concept called as variable initialization and variable declaration. If I declare a variable, it means I have not assigned initial value to the variable. Okay, it just declared. Initialization is not happened yet. But still, you will find when I'll run the code later, you will find that variable is having the value as 0 if it isn't. If it is boolean, the value is false. If it is a character, the value is empty string, empty character without anything, and so on. Okay, so that will be the default value. But if I create non-primitive data type, the default value will be always null. Okay, that is what non-primitive data types provide. Okay, so this cannot be null. The primitive data types at any point it cannot be null. Some default value will be set. Non-primitive can be null. Like when if you do not initialize, it will be null at all time. Okay, size is fixed. Okay, for primitive data type, int is 4 byte, character is I don't know, depend on character is 1 byte. Then we have a float, I guess 8 bytes, double 16 bytes. Okay, so that is what size of the data that it can store. Okay, and this byte is actually where the file is getting stored. We have byte array actually, not single byte. We do not use single byte anywhere. So if I wanted to store images, videos, and everything, we store in a byte format. Okay, short has 2 bytes of space, right? So that is something fixed. Every type of data has fixed set of size.
But that is not the case with non-primitive. Non-primitive, since it is storing in object, so it has object size, कि object का size कितना है, right? If array is of 10 elements, then 10 values can be stored. उससे कम भी we can store, but we cannot store more. Hmm? So that is the beauty of non-primitive data types. Here we have variable size, like size is not fixed, you do not need to worry. Okay. Then methods, like no methods, like whenever you create primitive data types, there is no additional functionality this thing provides. But all other things will provide us additional functionality. Like if you create a variable and if you put dot and control space in Eclipse, you will find a lot of suggestions. Okay, string को हम लोग I can convert into, I can slice the string, I can trim the string, I can do a lot of things with the string. But that is not possible with character type of data. Okay, इसके पास extra कुछ methods है नहीं. I can compare two strings, that is possible. String dot compare है ना. So but character के पास वैसे कुछ है नहीं. So that is what we do. So it has fields, it has methods, and it has support. Like non-primitive data types will support all object-oriented concept. So this is for basic understanding of the variable thing. That is when you do not need to do a lot of things, we prefer using primitive data types. Okay. Now, the creation, how the primitive data type will be created is defined by the Java. I cannot decide कि ये variable कैसे create होगा. You just need to initialize or define the variable. How to create it, the Java internal things will be taken care of. Okay. Now, non-primitive data types are user-defined, predefined, user-defined है. So you can create the non thing by using a new keyword. Okay. So string के लिए नहीं लगता, but बाकी चीजों के लिए लगता है. Like classes and interface, new that is how data will create. For other string and array, we have integer, capital int, integer, the non-primitive version of int, that we will be able to use directly. Okay. So yes, so this is all about the distinguishing between primitive and non-primitive data types that we have in Java. Everybody clear with this concept of data types and then categories of the data types? Any questions till now before I move forward? Okay. Okay, clear. Great. Thank you, Sandesh Paresh, for the and for the confirmation. All right. Moving forward. Now, memory representation. We talked about this thing in the current slide कि ये वाला चीज stack में store होता है, non-primitive store in heap. Now let's see how exactly in the action. Okay. So in Java, the data is stored in either stack or memory, depending on क्या आपका use case है. ठीक है. All local variables, okay, local variables like whatever variable create in Java, the primitive ones will get stored into the stack. Stack means first in first out, है ना. आपको अभी representation मैंने दिखाया था. ठीक है. So we will store it, all function call information कि कौन सा function कब call होगा, everything gets stored in stack. Stack का benefit है fast and automatically manage. You don't need to worry about it. ठीक है, बहुत ही फास्ट है. वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड्स आर गेट स्टोर्ड इनटू द स्टैक. ठीक है, ये स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है. नाउ वी हैव सेकंड थिंग व्हिच इज हीप मेमोरी. तो हीप में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट स्टोर होता है. ठीक है. सो हियर वी हैव आल्सो सीन, देखो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है. इट इज बेसिकली डायरेक्टली स्टोर इन मेमोरी. डायरेक्टली स्टोर इन मेमोरी मतलब वो स्टैक में स्टोर होता है. बट हीप में जो स्टोर होता है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है. इट इज नॉट एक्चुअल डेटा. ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा होता है. ठीक है. एंड डायनेमिक डेटा. ठीक है. हीप के अंदर वी स्टोर ऑब्जेक्ट एंड डायनेमिक डेटा, अगर मेरे पास कुछ डायनेमिक डेटा है तो. ओके. एंड हीप मेमोरी इज एक्सेस्ड वाया रेफरेंसेस. ठीक है. तो कोई तो इसको रेफर करेगा और फिर इसमें का डेटा एक्सेस होगा. जैसे कि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, देन वी हैव एरेज, एनी कस्टम ऑब्जेक्ट दैट आई क्रिएट. ठीक है. एग्जांपल देते हैं. क्लास इज अ data type. We'll see the class and everything in further slides, not further slides, in next upcoming sessions. But try to understand, this is a class, this is a variable that class is having. Okay. When I create object of a class, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. देखो ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होता है? हीप में. इट विल गेट स्टोर इन हीप.
Now if I instead I create a normal variable int count is equal to 10, that count variable will get stored in stack. क्यों stack में store होगा? Because it is type of data type is integer, int, okay, not integer. Integer मतलब capital I integer, capital I से जो integer बड़ा होता है ना. So I'm going to show you, don't worry. So that is stored in heap, but this int is getting stored in stack. Okay, so that is the difference between stack and heap, which is related to your primitive and non-primitive data type. Okay, so this is how data is getting stored into the memory of our system in Java programming. Everybody clear with these two differences? People may ask you and they may confuse you in the interview about this question, like what gets stored in stack, what gets stored in heap. Very simple, very basic. It doesn't have any relation with any of the programming thing that we do actually. Uh, but conceptually, it is expected. Conceptually, they are expecting you to know it. Okay? Sure, let's take a deep dive into the programming before I jump on the typecasting. So we'll come to the typecasting in few minutes. First, we'll create some variables. We'll create some primitive type of variable. We'll create some other type of variables and we'll come back. Okay. So I assume, right, I'll recommend all of you. So whenever you are going to join the session, join from laptop always. Okay. Because we are going to do the hands-on live here in the session. I don't believe in doing it later. Sometimes it's okay, but what happens, I know I have been with almost 50,000 students till now. I trained them, I guided them, I mentored them, and I observed a pattern among students. Like when I leave you, like you go and practice, nobody does, or hardly 1% or 2% people do it. And that is what I don't want. I want 100% result in my batches. So that's when I make sure once I'm done with my content, I deliver the things which I'm supposed to teach you. I give you the time and you have to be here on the screen and you have to do your work and showcase your work before you leave the session. Okay. Hence the recommendation is to join from the laptop always. Clear? So I hope you have joined from the laptop today. If not, do it from tomorrow. May I know, like, have you joined from laptop or mobile? Type in L for laptop, M for mobile. कौन सा डिवाइस से ज्वाइन किया? Laptop. Good. Okay, no problem, Sandesh. We have a session tomorrow as well. I recommend you to join from laptop because उसके साथ like with me you will be able to implement together faster. ठीक है, तो मजा आएगा आपको. You will be enjoying the learning. Hmm? Otherwise, you just listening, you will not understand the things, and it will be difficult for you to grab and implement things. Where is my Eclipse, 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 Eclipse? Hmm? Okay, so here we are in the Eclipse, and yes, Spring AI. Actually, we have evening batch. तो उसमें Spring AI का training चल रहा है. Like we are about to finish that Spring Boot वाला batch. Close the project. तो that is when it is open. ठीक है, ये अपना Java training का है. Hmm. So as I said, you guys are supposed to go ahead and start learning and doing the advanced thing. I'll just quickly come back to the syllabus content. So this is yesterday we have covered, not yesterday, day before yesterday, JVM, JDK, JRE. Today we are working on data types, memory. Tomorrow we'll be doing control statement, arrays, multidimensional arrays. Okay, the first 3 days of the content we are providing, but then there are a lot of things actually. We have 2 months of training program. We have a lot of things to cover. All right, I'm creating a new package. So I hope you have your day one. Yesterday it was name was day one. I renamed it as Java training, and I'm gonna create another file over here for the variables. Okay, I'll create a new package actually, new package, so that 1 week content I can put it in one package. Week one. ये SRC के अंदर बन गया क्या? ठीक है, रुको. हाँ, वो करेक्ट है. New package. What is package? Package is just a folder. Hmm? Nothing else. कि I'm trying to organize my data कि week 1 का डेटा इसी में रहे. So it is something I'm trying to do. अरे इधर आ जाओ. हाँ, आ गया. कैंसिल. ठीक है, ट्रैक किया फिर भी यहाँ पे रह गया. ठीक है, लेट इट बी. आई एम गोना
This was our yesterday's code. We have done hello world. I'm deleting this default package. मुझे नहीं चाहिए. Delete नहीं होता default package. वाह. I'll delete this setting at least. Okay, delete. चलो. All right. So I'm gonna create a new file. Okay. So new file, new class. Okay. Every day whenever we'll do some program, we'll create a new file. Data types. Okay. It's the name of the file, and it is created. So here I'll just create, this is normal class. Now while creating the class, I forgot to create or check on the box where public static void main method should be created. तो वो नहीं किया है उसने, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि करो. Because if I don't have, ठीक है, if I don't have this thing public static void main, I will not be able to run the file. Okay, that's the problem. Now let's try to understand the concept with two concepts, which is primitive data types, non-primitive data types. And देखो, तो ये integer में बोल रहा था आपको. So this is integer is with capital I, and this int is a small I, which is a primitive data type जिसमें 42 वैल्यू है. एंड मैं इसको डायरेक्टली इसको अगर मैं असाइन नहीं करता हूँ, दिस इज अ इनिशियलाइजेशन, दिस इज अ डिक्लेरेशन. अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो दिस इज अ डिक्लेरेशन. तो डिक्लेरेशन में उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो असाइन होता है, विच इज डिफॉल्ट वैल्यू. ओके, बट राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू इनिशियलाइज इट, मतलब उसको एक वैल्यू दिया है. ठीक है. तो from integer value, if I want to do non-primitive data type, if I want to convert into the primitive data type, I can use integer dot value of that particular thing, and then it will get converted into the integer object. Okay, this is object. Okay, so this is how we create the integer. Focus on integer as of now. फिर character का भी एक version है. So if I want to store only single characters, I can use char type of data. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी primitive data types है उनके जो data types है, they are shown in different color. But non primitive का जो है वो normal black color में ही है. There is no change. In Eclipse, in IntelliJ it might be different color, but I'm just see ID खुद बता रहा है कि there is a difference. They are not same. ठीक है. So that's when you're supposed to understand. Okay, primitive data types, non-primitive data types. So currently we have seen string, integer and double only. Array anyways we are going to cover tomorrow, तो हम लोग देख लेंगे. Classes हम object oriented programming के टाइम पे वापस देखने वाले हैं. तो those things I have not included over here. Okay, and now we'll see कि integer type में क्या. Now it is just print statement, हम लोग सारी चीजें print कर रहे हैं. So but before that ये print तो होता रहेगा. ठीक है. Just try to understand if I want to create integer value, I'm going to type this is just the name of the variable. This is a data type, name of the variable, assignment operator, and actual value of it, actual value of the variable. Okay, and this 42 value is getting stored in some memory location जिसका नाम integer int value है. ठीक है, this is the name of the location where this is stored. Okay, it is at the end it is getting stored in the memory only. तो आप बताइए, so in which type of memory this is getting, this will store, heap or stack? Can anybody tell me? हमने देखा था अभी 5 मिनट पहले. Heap or stack? Stack, yes. तो ये primitive data type जो है it will get stored in the stack. ठीक है. So that's what makes it डायरेक्टली एक्सेसिबल और एक्सेसिबल रियली फास्ट, बिकॉज ये स्टैक में स्टोर होता है. ठीक है. ये जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट विल गेट स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट, एंड देन ऑब्जेक्ट विल हैव द रेफरेंस, एंड दैट रेफरेंस विल गेट स्टोर्ड टू दी हिप. और फिर वहां से एक्सेस होने के लिए इसको टाइम लगता है. इट इज नॉट दैट इजीली एक्सेसिबल एज कंपेयर टू द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. ठीक है. चलो, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट दिस 4 वेरिएबल्स, और ये 4 पहले बनाएंगे और फिर ये 4. नाउ दिस इज स्लैश स्लैश इज अ कमेंट इन जावा, सिंगल लाइन कमेंट. मल्टी लाइन कमेंट के लिए कुछ अलग यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट स्लैश आई गेस. हाँ, तो मल्टी लाइन कमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको एस्ट्रिक स्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक, ये बीच वाला एस्ट्रिक नहीं होगा तो भी चलेगा, एंड देन एस्ट्रिक स्लैश. तो इससे ये मल्टी लाइन कमेंट बनता है. आई यूज अ शॉर्टकट इन इक्लिप्स विद टू कमेंट. कंट्रोल स्लैश करेंगे तो सिंगल लाइन कमेंट बनता है, कंट्रोल शिफ्ट स्लैश करेंगे तो मल्टी लाइन कमेंट बनता है. I'm just doing Control Z, and I want all of you to take the note of the thing that you're able to see. Create a new class, data types, and write down the variables inside it. Okay, you have कितना time हो गया? 36. You have 3 minutes. 39 को हम लोग वापस
continue crying. I'm here. Meanwhile, if you have any questions, you can ask. Anaga, Paresh, Sandesh. I assume everybody is typing. For Sandesh, since you're joined from mobile phone, I recommend you to join from laptop as well. And हमारे साथ करो, you will get lot of benefit. Create these four variables first, the basic data types. Once you're done, type in done into the chat box. Okay, so that I'll understand that you're done. Whatever you're able to see on the screen, if you're able to type all these things and you're done, you have to type done into the chat box. Perfect, Paresh. Thank you for the confirmation. We'll wait for others. One more minute. All right.
Can you please confirm, Anaga, if you're done? And Sandesh, can you please confirm if you're still from mobile or have you switched to laptop so that I can decide whether to wait or to continue? No, I'm outside of my home. No problem, Sandesh. No problem. Then be with your mobile phone only. I'll just wait for Anagha to respond and then I'll move forward. So what will the benefit? Okay, so the done, perfect. So the benefit of this thing doing you here live, okay, we are spending 2 minutes, 3 minutes, because I'm going to give you dedicated time कि 2 मिनट में ही करना है. I'm going to ask again, again and again. फिर last में we are going to share the screen. I'll be verifying whether we have done everything and anything that is required. तो इससे आपका टाइपिंग का स्पीड अच्छा होगा, आपको समझेगा कि कब हाउ व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ जावा. योर माइंड विल थिंक इन द डायरेक्शन कि अरे वट एवर आई एम राइटिंग इज करेक्ट और नॉट. ठीक है. एरर्स आएंगे, आई विल हेल्प टू सॉल्व द एरर्स एंड फिर थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड इन पैरेलल. Like whatever we are covering, your mind will digest and retain all the information. So this is very important for all of you to do it with me. फिर बाद में आप नहीं करते हो ये मुझे पता है, ठीक है. सो बेसिकली आई हैव बीन विद क्राउड, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट age groups, working professionals, freshers, college students, and that is when I have decided to switch this particular thing. तो हम करेंगे. So once means every day I'm gonna review the code anyways, बट आई गिव यू द टाइम. समटाइम्स अगर बहुत ज़्यादा बड़ा कोड है लाइक ये फिर बाद में एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह उसके बाद शुरू होगा. सो दैट टाइम आई शेयर द कपल ऑफ लाइन्स विच आर लेस इंपॉर्टेंट एंड आई लास्ट कपल ऑफ लाइन्स टू टाइप यू सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि ठीक है यार ये वाला हमें ही खुद करना है मीन्स इट इज़ इंपॉर्टेंट. Something which is not important we have covered in the past, I normally share it in the chat so that you can copy it directly and you can move forward. ठीक है. Of course, all the code whatever I'm going to teach you will be readily available on internet. चैट जीपीटी को पूछो वो दे देगा. ठीक है. whatever feedback, ये देखो ये जो कोड ऑटोमेटिकली आया, आई हैव नॉट टाइप्ड एनीथिंग. So this has came from the Gen AI tool, okay, which is installed in this ID. So it is readily available, which I'm telling you. But what I'm teaching over here, what you're learning here is to train your brain to build a Java program, okay, by yourself without using any AI tool. When the time will come when we'll about to end our training and I'm going to give you a project to work upon. So that time I'll give you the tools, all the AI related tools, which will speed up your software development process. हमेशा मैं बैच खत्म होने के बाद ही देता हूँ बिकॉज उसमें आई हेल्प पर्सनली टू इंस्टॉल ऑल द एआई टूल्स विच आर नीडेड टू स्पीड अप योर डेवलपमेंट आफ्टर यू कंप्लीट द ट्रेनिंग. बिकॉज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको आपका दिमाग यूज करना है, यू टू यूज योर ब्रेन एंड देन राइट द कोड. एक बार आप उसमें अच्छे बन गए तो लेटर यू कैन यूज एआई टूल्स एंड स्पीड नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट जो फाइनल प्रोजेक्ट आपका रहेगा. तो एवरीबडी विल गेट अ वीक्स टाइम, एक वीक में आपको वो करना होगा एंड फिर उसके लिए आपको एआई की टूल की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. सो दैट इज एडिशनल थिंग विच वी डू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड गोइंग फॉरवर्ड यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है. Alright, I'm moving forward. So this is just a variable initialization. I have initialized variable. Normal variables are initialized like this, the primitive data types. Non-primitive are also initialized like this. ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने क्या किया, so it's not necessary कि ऐसे ही करना है like इसी का वैल्यू. यहाँ पे हम लोग I cannot directly put actually. So if I put 10, I have to convert. नहीं ये हो गया, ऑटो बॉक्सिंग कर रहा है वो. ठीक है. तो इट्स फाइन. सो वॉट एवर आई वॉन्टेड टू आई कैन पुट द वेरिएबल्स लाइक दिस एज वेल. ठीक है. तो हम
Yep, sorry, there was some network glitch. I got disconnected from the meeting and I rejoined. Normally ऐसा होता नहीं. This happened for the very first time. ठीक है, no worries. I'm moving forward. So what I was trying to tell you is you have to use this shortcut SISO control space. फिर वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में भी लेके आएगा if you are using Eclipse. If you are using other IDs, I'm not sure about the shortcut. So that is when I recommend to use Eclipse. It gives you a lot of features. ठीक है. So and inside it you are going to you will be printing all the variable का value. Okay, while you print the variable का value, it is very basic thing. So I don't want you guys to type in everything. So this is only print statement. So hence I'm just sharing it here in the chat. You can copy it from here and you can paste it in your code so that you will get the printed value of it. Okay, and I'm running the code. I assume you are copying the code which I just shared. ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको टाइप करने में टाइम वेस्ट करेंगे नहीं. तो ये सर प्रिंट कर रहे हो इंटीजर कोलन, देखो कोलन के बाद स्पेस दिया है जस्ट टू प्रिंट द डेटा इन करेक्ट फॉर्मेट. देर आर टू मेथड्स, प्रिंट एंड प्रिंट एलन. प्रिंट अगर मैंने यूज किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो नेक्स्ट जो वैल्यू है उसके सामने ही प्रिंट होता है. अगर मैंने प्रिंट एलन यूज किया तो एलन विल टेक द नेक्स्ट वैल्यू टू द न्यू लाइन. इसके बाद एक नया लाइन ऐड कर देता है. दैट इज व्हाट एलन डज. Okay, so yes, I'm going to run the code. How to run the code I have shown you yesterday. There is an option over here, run as Java application. And you will see the code will be running. रन हो गया, आउटपुट भी आया है, बट मेरे इसमें मैंने डिसेबल किया तो यहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द कोड. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंटीजर इज 42. देखो इंटीजर ऑब्जेक्ट में ये 10 इज ओके, तो ये 10 वहां पे चल गया है ना. अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ. ठीक है, तो देखो ये यहाँ से मैं कर रहा हूँ सेमीकोलन रिमूव इंटीजर ऑब्जेक्ट से. तो ये हुआ इनिशियलाइजेशन. यहाँ से भी मैं कर रहा हूँ सेमीकोलन रिमूव. तो ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ दिस वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ इंटीजर ऑब्जेक्ट. अभी देखो ये इंट वैल्यू को क्या बोल रहा है, लोकल वेरिएबल मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज. इनिशियलाइज नहीं हो रहा तो डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए ना, नहीं एरर ही दे रहा है. ठीक है, इसको भी एरर ही दे रहा है. ठीक है, तो इनिशियलाइज नहीं किया तो तब तक वो चलेगा नहीं, इज व्हाट इट इज सेइंग. ओके, इनिशियलाइज इसको नल कर सकते हैं, इसको भी इनिशियलाइज कर सकते हैं एज अ 0. तो ये करते हैं हम. ठीक है, ये वाला चलेगा. तो देखो इस कैपिटल इंटीजर में विच इज नॉन प्रिमिटिव, उसमें हम लोग नल लिख सकते हैं, बट इसमें नल नहीं लिख सकते. देखो अगर मैं ऐसे करूंगा तो इट विल गिव मी द एरर डायरेक्टली. ये बोलेगा मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट नल टू इंट. तो इसको नल नहीं कर सकते, इसको 0 कर सकते हैं. द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इज ऑलवेज देयर. फॉर नॉन प्रिमिटिव डिफॉल्ट वैल्यू नहीं डाला तो भी चलता है, नल रख सकते हैं. दिस इज द बेनिफिट ऑफ इट. Yep, you can see the integer is 0 and the integer object is null. तो ये object को null कर सकते हैं, no problem at all. But primitive data type को null नहीं करेंगे. It is not nullable basically, जो हमने differences में भी देखा, right? So you, as I shown you, you can also try it by yourself and this should work. Okay, as we have seen in the difference कि ये not null रहता है. ठीक है, ये वाला non primitive data type can be null एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप कैन नॉट बी नल. ये नल नहीं हो सकता है. ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू अगर उसको डालना है तो 0 डाल सकते हो इंटीजर को. सो दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग. ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर विद द कोड एग्जांपल एंड एवरीथिंग? यस, हैव यू एग्जीक्यूटेड द कोड व्हिच आई शेयर्ड एंड हैव यू सीन द आउटपुट? यस अनघा, परफेक्ट. चलो आई एम मूविंग फॉरवर्ड. कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? आगे जा रहे हैं. सो we have seen data types, we have seen primitive data types, we have seen ये इसको नहीं दिखा सकते, इसको किधर गया? See stack and memory actually कहाँ पे store हो रहा है, I cannot show you because that is not possible. But you fundamental conceptually you understood कि अगर मैंने local variable बना दिया like this, it is stored in stack. अगर मैंने object बना दिया तो it will go to heap. भी कंप्यूटर में stack memory किधर है और heap memory किधर है, I cannot show you. That's not possible. Okay, अभी जाएंगे next topic which is typecasting.
इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग को फ्लोट में या फिर डबल में कन्वर्ट करूंगा, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट करूंगा, नंबर को कन्वर्ट करूंगा स्ट्रिंग में, ऐसे सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इट इज शोइंग माय इंटरनेट इज अनस्टेबल, वाह। तो ये वाईफाई को कुछ प्रॉब्लम हुआ है मेरे, एक सेकंड रुकिए। परफेक्ट। यस। Okay, so now we are going to forwards our next concept, which is called as typecasting. तो टाइपकास्टिंग में होता क्या है, बेसिकली वी कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। ठीक है, उसमें भी दो टाइप है, इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। ठीक है, इम्प्लिसिट में क्या होता है, वाइडनिंग द कन्वर्जन, मतलब स्मॉलर डेटा से लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। सो दिस लाइक वाइडनिंग द कन्वर्जन, मतलब पहले वो इंटीजर था, उसको फिर मैंने डबल में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग होता है जो नैरोइंग द कन्वर्जन, मतलब पहले लार्ज डेटा टाइप था, फिर उसको मैंने स्मॉल डेटा टाइप में कन्वर्ट किया। इम्प्लिसिट करेंगे तो वो स्मॉल टू लार्ज रहेगा, एक्सप्लिसिट कास्टिंग को लार्ज टू स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। नाउ व्हाट इज लार्ज, व्हाट इज स्मॉल एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसके लिए आपको समझना होगा कि विच टाइप ऑफ डेटा स्टोर्स व्हाट, हाउ मच कैरेक्टर्स और हाउ मच बाइट्स ऑफ थिंग। तो उसके लिए लेट मी जस्ट क्विकली ब्रिंग यू, मेरे पास है नहीं स्लाइड पे, एक मिनट है, ये इंपॉर्टेंट है, बिफोर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग आई शुड हैव एडेड दैट पर्टिकुलर इमेज, बट अभी यहाँ पे नहीं है, एक सेकेंड रुकिए, आई जस्ट ब्रिंग इट अप, बिकॉज उसके बिना इट विल बी अधूरा। ठीक है। जावा डेटा टाइप्स साइज इमेजेस बाइट शॉर्ट इंट कैरेक्टर बुलियन। ठीक है, मिल गया मेरे को। एक सेकेंड रुकिए, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इट ऑन द slide so that you can also refer to it. ये important है, I don't know how I forgot it, but I need it. I have paused my screen, you are not able to see what I'm doing in the background. Okay, byte बोल रहा था मैं, ये bits में होता है इनका size। ठीक है, I'm going to the PPT, variables, data types, typecasting, memory representation, typecasting के पहले होना चाहिए ना, फिर बाद में भी चलेगा, फिर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। क्या चाहिए यहाँ पे, so size of the data types। हम्म तो आई हैव इट ऑन माई स्लाइड्स। तो ये है उसका साइज, मतलब अभी आपको पता होना चाहिए ना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, फ्रॉम जब मैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोल रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, है ना। सो लाइक एक्सप्लिसिट इज लाइक फॉर स्मॉलर टाइप ऑफ डेटा टू द बिगर टाइप ऑफ डेटा, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट इज लाइक लार्जर टाइप ऑफ डेटा टू द smaller type of data. This is called as narrowing the conversion. It is called as widening the conversion. तो उसके लिए बिफोर यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, कोड तो है वहां पे, हम लोग कर कर लेंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। बट देखो अभी एग्जांपल देखो, इन टू डबल मतलब छोटे से बड़े डेटा टाइप में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, विच इज इन टू डबल, लाइक स्मॉल टू लार्ज है ना, स्मॉल टू लार्ज। तो कैसे स्मॉल टू लार्ज पता चला, देखो इंट का साइज 32 बिट्स है, और डबल का साइज डबल था ना वो, क्या था, डबल था, करेक्ट। तो 32 बिट्स से हम कन्वर्ट कर रहे हैं 64 बिट में, है ना। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज स्मॉल साइज का डेटा मैंने लार्ज साइज के डेटा में कन्वर्ट किया, विच इज कॉल्ड एज implicit typecasting। ठीक है, दैट इज वाइडनिंग द कन्वर्जन, implicit typecasting।
और यहाँ पे हम लोग उल्टा कर रहे हैं, नैरोइंग द कन्वर्जन, मतलब छोटे टाइप का डेटा, सॉरी बड़े टाइप का डेटा था लाइक एक्सप्लिसिट में। सो द डेटा वाज इन अ बिगर फॉर्मेट एंड आई एम कन्वर्टिंग इनटू द स्मॉल फॉर्मेट। तो वो कहाँ से पता चला हमें कि डबल ये बड़ा था उसको कन्वर्ट करें छोटे में, इंटीजर में। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अनदर टाइप ऑफ कास्टिंग। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिफोर आई शो यू द डेमो एंड वर्किंग एग्जांपल? कॉन्सेप्ट आपको समझा गया कि क्या कर रहे हैं टाइप कास्टिंग में हम लोग? यस, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। संदेश said yes, Paresh said yes, अनघा, हाँ, परफेक्ट। सो बी वेरी एक्टिव इन द चैट। देखो आप चैट चैट में एक्टिव रहोगे तो यू विल बी 100% फोकस्ड ऑन द स्क्रीन। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, योर फोकस विल बी हियर। ओके, जैसे ही आप इधर उधर डाइवर्ट होंगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। व्हेन यू रिस्पॉन्ड, योर फोकस शिफ्ट्स ऑन द स्क्रीन एंड सिर्फ आप सिर्फ मेरी ही बात सुनोगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हेन आई आस्क एवरी 15 मिनट्स और सो टू ब्रिंग यू बैक इन टू द सेशन। ठीक है, नहीं तो आप फिर कहाँ पे जाओगे, चल रहा है, यू डोंट नो एनीबॉडी हु इज कंटिन्यूअसली टॉकिंग, यू आर जस्ट लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग। तो वैसे नहीं सीख पाओगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फिर आपको नहीं आएगा तो मेरे को मजा नहीं आएगा। सी वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एंजॉय द प्रोसेस, राइट? आई लव हेल्पिंग पीपल, टीचिंग देम कि क्या वो सीख रहे हैं। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट, अरे ये मेरे को पता चल गया अभी, आई रियली अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई फील गुड, आई फील हैप्पी। ठीक है, एंड दैट इज व्हेन we are, we have started Tech Amplifiers long back and we are doing it very rigorously. चलो हम लोग आगे जा रहे हैं। Explicit typecasting we have seen, implicit typecasting we have seen. Now let's see the example. Okay, I'm going to the Eclipse. Here is Eclipse. Okay, data types हो गया। अभी मैं नया फाइल बना रहा हूँ। Right click, new class, typecasting. Now if you observe, I'm creating new file for every concept. Why? बिकॉज आई शुड हैव इट, मतलब ये मेरे लिए नहीं, मैं ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फोल्डर डिलीट कर देता हूँ। सो यू शुड ऑल्सो डू द सेम। आप भी जब करोगे, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू डू समथिंग इन योर कोड, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, तो यू आर सपोज टू क्रिएट न्यू फाइल फॉर एवरी न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, वीक वन नाम का पैकेज बनाइए, उसके अंदर अलग अलग फाइल्स बनाइए, सो दैट एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग या फिर वीक वन वीक टू आपको पता चलेगा व्हाट ऑल थिंग्स दैट यू हैव लर्नड, और यू विल हैव द कोड आफ्टर अवर ट्रेनिंग। आपका इंटरव्यू है, कुछ है, आपको अगर प्रैक्टिस करना है ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, सो यू कैन कम बैक एंड यू कैन रिविजिट। दैट्स द बेनिफिट दैट यू गेट। ठीक है, दैट्स द बेनिफिट दैट यू गेट व्हेन यू create a separate file for every concept. So go ahead and do that. ठीक है, so once you create a new file of typecasting, kindly type created into the chat. Yes, kindly type created into the chat. Have you created a new file for typecasting? Created टाइप करो, मुझे पता चल जाएगा। ये टाइप कास्टिंग शायद लास्ट कॉन्सेप्ट है, एक मिनट चेक करने दो। टाइप कास्टिंग, टाइप्स डेटा टाइप हो गया, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड देन वी आर डन। हैंड्स ऑन तो हम लोग पैरेलली कर ही रहे हैं, समरी एंड। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग इज लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। फिर मैं आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, यू आर गोना ट्राई आउट ऑन दिस थिंग। ये इंपॉर्टेंट है, आई वांट यू टू डू क्रिएट अ न्यू फाइल। क्रिएट करने के बाद बताओ मुझे क्रिएटेड करके टाइप कास्टिंग वाला फाइल क्रिएट किया क्या, यस नो? यस नो से नहीं, क्रिएटेड करो फिर मुझे पता चलेगा। See, the content is arranged in such a way, Paresh said yes, कि you will be understanding the concept and you will be able to implement it as well with me. ठीक है, तो उससे you will enjoy the learning process, the whole process that is happening, you will enjoy. And I also said yes, perfect.
मूविंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे अभी इसने बहुत सारी चीजें दी, आई एम नॉट गोना टेक। सी द एआई टूल इज सजेस्टिंग मी कि आप ये टाइप करो। ये ग्रे कलर में है तो एआई टूल बता रहा है, ठीक है। सो व्हाट आई डू, आई विल नॉट टेक इट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या है मैंने कल एक्सप्लेन किया था, वॉइड मेन स्ट्रिंग, उसमें पैरामीटर्स रहेंगे और ए आर। इसको मैं दिखाऊंगा आपको डेमो जब हम लोग आगे जाएंगे ना, I'll show you इसकी क्या होता है। Now here I'm gonna take the example directly from our PPT, जो भी हमने किया था int a, और उसको डबल में कन्वर्ट कर, एक एक करेंगे पहले। int a, int is a variable, a is equal to variable value is 10. Now I'll convert into b, that is डबल। ठीक है, कैसे किया था, डबल b is equal to a। तो यहाँ पे आया ए, सेमीकोलन। सो ये हुआ टाइप कास्ट। ठीक है, अभी देखो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे उसको, ये वाला नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इनटू डबल। तो उस यहाँ पे बी का वैल्यू रहेगा, सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि ए का वैल्यू क्या है एंड बी का वैल्यू क्या है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। हाँ, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। ए का वैल्यू रहेगा 10, जब वो डबल में कन्वर्ट होगा वही 10, इट विल बिकम 10.000, बिकॉज ये डबल इज डेसिमल पॉइंटर। तो दैट्स व्हेन यू विल फाइंड द वैल्यू इज रिटन इन डिफरेंट फॉर्मेट। कंसोल देखो, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इंट इज इंटीजर, इंटीजर में वो होल नंबर होता है, एंड जब वो डेसिमल में कन्वर्ट होगा, राइट, यहाँ पे रीअसाइन कर रहे हैं। ठीक है, इट इज इजीली पॉसिबल। देखो, अगर मैं छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब इमेजिन दिस इज अ बिगर बॉक्स, दिस इज अ स्मॉलर बॉक्स। स्मॉलर बॉक्स में कुछ चीज़ है तो बड़े बॉक्स में रखने के लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आई डोंट नीड टू डू एक्स्ट्रा एडिशनल थिंग, डायरेक्टली रख देंगे, है ना। तो डायरेक्टली मैंने रख दिया। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिटी बोलते हैं ना, हाँ, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो वो हो जाएगा, इट वोंट बी अ बिग डील, इट विल बी डन वेरी इजीली, जस्ट रीअसाइनमेंट वोट विल वर्क। और फिर हम लोग देख सकते हैं एडिशनल 10.0 ऐड हुआ, ये हुआ इम्प्लिसिट। अभी एक्सप्लिसिट देखते हैं, मतलब छोटे से बड़े में कन्वर्ट करने का। तो सपोज आई वेरिएबल डबल एक्स, ये चलेगा, एंड देन आई एम गोइंग टू टाइप कास्ट। अभी मेरे को डबल को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कन्वर्जन डायरेक्ट नहीं होता। आई कैन डू लाइक इंट y इज इक्वल टू x, जैसे वहां पे किया था ना। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस वोंट वर्क, दिस वोंट वर्क। क्यों, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग डबल टू इंट। हाँ, ये प्रिंट स्टेटमेंट को छोड़ दो, इधर ध्यान दो। सो दिस इज नॉट पॉसिबल और दिस इज नॉट गोना वर्क, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बॉक्स में जो भी है इट मे हैव मल्टीपल थिंग्स। देखो 9.7.8 है, तो इंटीजर में इतना नहीं बैठता, ये आगे वाली चीजें नहीं बैठेगी। ठीक है, सिर्फ 9 ही आई कैन स्टोर, 7.8 विल नॉट बी एबल टू स्टोर। तो वो कन्वर्जन करने के लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा एडिशनल। जैसे बड़े बॉक्स में इमेजिन करो, यू आर हैविंग अ बिग बॉक्स, इट हैज 10 थिंग्स, यू वांटेड टू स्टोर इट इन स्मॉल बॉक्स जहाँ पे सिर्फ 8 ही चीजें बैठ सकती है, वो भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक से डालना पड़ेगा, राइट। तो योर एडिशनल मेहनत दैट यू आर डूइंग, इट इज कॉल्ड एज, it will be represented in this format in what, इन जावा। तो उसको एक राउंड ब्रैकेट में हम करके देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था इंटीजर में, उसको टाइप कास्ट कर रहे हैं पहले, और फिर मतलब इस वैल्यू को पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर स्टोर कर रहे हैं नए वेरिएबल में। सो दैट इज ओनली हाउ इट विल वर्क। मैं आपको दिखा रहा हूँ रन करके दूसरा वाला भी, एंड दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। देखो, ये 9.70 था, उसमें से सिर्फ 9 ही मैं स्टोर कर पाया हूँ y में, बिकॉज इट इज इंटीजर टाइप, बिकॉज इंटीजर डज नॉट अलाउ यू टू स्टोर द डेसिमल पॉइंटर्स। तो ये 7 8 का क्या हुआ, इट हैज इग्नोर इट, ट्रिम्ड इट, मतलब रिमूव कर दिया इसको। किसने रिमूव किया, जब हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को यूज किए, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्लियर। सो दिस इज इम्प्लिसिट एंड दिस इज एक्सप्लिसिट। यहाँ पे भी कमेंट्स में इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। चलो, यू हैव टू राइट दिस कोड, यह 3 मिनट्स। एवरीबडी अंडरस्टूड, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग कैन यू प्लीज टेल मी कि आपको कौन सा कोडिंग वाला एग्जांपल समझा क्या, पहले हमने नॉन टेक्निकली देखा था, अभी हम लोग एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, थेरोटिकली देखा था, अभी प्रैक्टिकली देख रहे हैं।
Clear? इधर chat. एक second now. Perfect, Paresh, Anaga, thank you so much for the confirmation. And then we'll see the advantages, कब कहाँ पे क्या use करना है, and then I'll give you some task and we'll be wrapping it up. If you have any questions, any doubts, the session is there till 9:30. You can ask me. Yesterday I wrapped it early, or day before yesterday. मुझे कुछ 9 o'clock को एक मीटिंग था इसलिए. But every day the session will go from 8 to 9:30. मतलब 8 to 9 is the time where I'll teach you. 9 to 9:30 will be the time where I'll solve your doubts, queries and questions. ठीक है. इसके बीच में हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे. मैंने प्लान भी किया है, so I'll show you in a couple of minutes. Okay, Ananga said okay. So इधर अपना PPT. हाँ, here is our thing. तो वी हैव समथिंग प्लान कि हम लोग अभी कल हम लोग प्रॉब्लम्स देंगे आपको. आई गिव यू कोड एक्सरसाइज, ये आपको मैं आज दूंगा. ठीक है. टुमारो विल डू सम प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन लूप्स एंड अदर थिंग्स. फिर डे 4 को हम लोग करेंगे लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, ये सबका करेंगे. ये डे 1 पे रिज्यूमे नहीं कर पाए बिकॉज वो बहुत ही बिगिनर थे. वी हैव लेस पीपल. सो डे 4 विल स्टार्ट विद लिंक्डइन एवरी डे. नाउ अगेन डे 5 को हम लोग रिज्यूमे के ऊपर बात करेंगे. So then every day you'll have interview questions. This day I'll take your interviews. यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे. वी हैव एडिशनल डाउट सेशन जहाँ पे हम लोग कुछ अलग चीज़ें करेंगे. समटाइम्स इट विल बी प्रैक्टिकल्स, समटाइम्स इट विल बी, देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, है ना. 30 minutes I'll give you स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग एलियस. तो ये आपको टास्क है, आपको करना पड़ेगा. सो दिस विल बी एज सुन एज वी मूव फॉरवर्ड. तो देर आर इंटरेस्टिंग थिंग्स आई हैव प्लान्ड एंड यू विल एंजॉय इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स टुगेदर. ठीक है. तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू गो. सो होल 8 weeks ऑफ ड्यूरेशन इज प्लान्ड. एंड यहाँ पे हम लोग डीएससी के प्रैक्टिस करेंगे. विल टॉक अबाउट सर्वलेट, विल हैव इंटीग्रेशन. यहाँ पे कोड करने के लिए टाइम लगेगा. ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को टाइम लगेगा मुझे. तो कोड हमने उस 30 minutes के सेक्शन में डाला है. ठीक है. आई शेयर द डॉक विथ यू सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कब कौन से दिन क्या होने वाला है. ठीक है. So everything is planned in detail. You just have to show up on the day wherever there is session. Do not miss out on the session is the only request. ये keep these 2 months as your dedicated time and अभी ये अक्टूबर खत्म होगा, नवंबर दिसंबर 2 months, and next year 2026 you will see yourself as becoming a good programmer. Okay, and for that you have to put dedicated efforts for next 2 months. Clear? All right. Once you're done with the code, please let me know. अगर ये कोड आपका लिख के हुआ है तो मुझे बताइए. वंस यू डन, यू हैव. मैं 1 मिनट वेस्ट किया ना उधर. ठीक है, मैं और 1 मिनट दूंगा. ठीक है. परेश इज गुड. परेश, आई एज्यूम यू आर टाइपिंग इट बाय योरसेल्फ. आई एम एज्यूमिंग दैट यू आर नॉट यूजिंग एनी एआई टूल फॉर गेटिंग थिंग्स डन. इनिशियली मत करो जब आपका ट्रेनिंग चालू है. वंस यू आर डन विद द ट्रेनिंग, बाद में आपको एआई टूल्स यूज करने के लिए मैं खुद अलाउ करूंगा. अगर आप अभी कर रहे हो तो मत करिए, इज व्हाट आई रिकमेंड. Yes, are you? No, I don't have any AI tool identity system. Perfect. So it means you're typing, correct? Yeah, and your typing is fast. Good. 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 So typing fast आपका, no problem. So let it be. Like for others, they might need more time. They are beginners. So I consider everybody until सब लोग नहीं सबका नहीं होता, मेरे को मजा नहीं आता है. In other batch, I'm last. हाँ, वही होता है, वही होता है. So basically, you see, this is like you are now in the bigger room. तो जो आपका अलग ट्रेनिंग है ना, तो दैट इज अ बिगर रूम. वहां पे 10 years एक्सपीरियंस, 14 years एक्सपीरियंस के लोग हैं. ठीक है. यहाँ पे ऑल आर फ्रेशर, दे आर बिगिनर्स गेटिंग स्टार्टेड. ठीक है. सो देयर इज द डिफरेंस. नाउ वहाँ उस बैच के बाद यू विल गोना ग्रो बहुत खतरनाक लेवल पे. ठीक है. सो ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज योर कैपेसिटी. ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज योर क्या बोलते हैं उसको, skills that will help you to grow. ठीक है अनगा, I'm waiting for you. Once you're done, let me know. So Paresh is from Spring Boot training actually, not from Java. So he just joined here to understand क्या कर रहे हैं हम लोग.
ठीक है. All right, so we do have two trainings going on in parallel. Morning 8 o'clock, मतलब I personally take these two trainings. Morning 8 o'clock and evening 8 o'clock. 8 a.m. and 8 p.m. is my favorite. 8 is my favorite number. So that's when I keep those trainings going. And then we do have multiple trainings happening at Tech Amplifiers on different technologies. Okay, all right. Anaga, you just have to type something which is shown on the screen. And before we wrap up, I wanted to see if you are able to do it. अगर आपने खुद ने बोल दिया तो मैं accept कर लूँगा. Then I'll move forward to next slides. One more minute, Anaga, for you. Sandesh, since you're joined from mobile phone today, I'm not asking you again and again and again. But once you join from laptop, I'll be again checking with you whether you are able to do it. Are you facing any issues, Anaga? If you are, then let me know. I'll help you. I'll guide you personally. तो दिस इज व्हाट हैपेंस. आई लाइक लेस पीपल इन माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. तो मजा आता है सबके साथ काम करने में. वी विल हैव फ्यू टू मोर पीपल ज्वाइनिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक. Basically, in this batch they have already enrolled, and few other people are thinking they are doing the things, taking a little time to understand. नहीं, अंडरस्टैंड वाला ठीक है, आपको टाइप करना है यहाँ पे जो कोड है ना. सो द कोड यू आर सपोज टू टाइप. हाँ, तो वो अंडरस्टैंडिंग वाला इज लाइक थेरोटिकल पार्ट में हो जाता है. So while implementing, you have to be very focused. As soon as I start giving you the time, you should start creating the files. You should start typing. तो आपका, and I would recommend you to type with two hands, both the hands. दोनों हाथ कीबोर्ड पे रखना है और दोनों हाथ से टाइप करना है. सो दैट्स हाउ योर टाइपिंग स्पीड विल इंक्रीज. जब हम लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग में करते थे ना टेक एम्पलीफायर्स में, वी डू इट लास्ट टू लास्ट ईयर. मतलब अभी भी चल रहा है, बट आई एम नॉट गोइंग देयर. तो आई यूज टू सिट विथ माई स्टूडेंट्स एंड फिर उनके साथ बैठ के फिर कोई बच्चा एक ही हाथ से टाइप कर रहा था, उनको मैं बोला है यू हैव टू हैंड्स, राइट, यूज बोथ हैंड्स टू टाइप. और फिर ऐसे 3 महीने की ट्रेनिंग में, 2 महीने की ट्रेनिंग में, आई हेल्प लॉट ऑफ पीपल टू become good programmers along with increasing the speed of typing. तो सॉफ्टवेयर डेवलपर आईटी में आप लोग काम करोगे तो आपको कीबोर्ड और आपका फिंगर्स दे शुड बी अटैच्ड. विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड यू शुड बी एबल टू टाइप. और ये होगा आफ्टर 2 to 4 months ऑफ डेडिकेटेड एफर्ट्स. तो वो ये होता है. आई हैव सीन इट कि जिसको कीबोर्ड का कौन सा की कहाँ पे है ये नहीं पता है, फिर भी दे आर एबल टू डू इट वेरी इजीली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, बिकॉज उतना प्रैक्टिस करके लेंगे हम लोग. ठीक है. सो यू विल अंडरस्टैंड इट इन डिटेल. That is when you see on Google the reviews that people have put in. They are really great. All right, डन अनगा. यहाँ पे टाइप करने से अच्छा है डन, इतना वर्ड मेरे को सुनना है. डन. आई होप इट्स डन. चलो, आई एम मूविंग फॉरवर्ड. Here I go. So typecasting we are done. And if you need the code, I can share with you later. The data size we have seen. Real world application. कहाँ पे data types used है? Data types are data types define how data is processed and stored in the enterprise system. मतलब कैसे स्टोर होगा और कैसे ट्रांसफर होगा. ओके. सो दैट इज व्हाट डेटा टाइप्स डिसाइड. ओके. इन बैंकिंग सिस्टम डबल इज यूज फॉर कैलकुलेशन, इंटरेस्ट, बैलेंस वगैरह ये सारी चीजें यूज करने के लिए यूज होती है. इंटीजर नॉर्मली आईडीज के लिए यूज होता है. स्ट्रिंग नॉर्मली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन के लिए यूज होता है. बुलियन इज यूज की यूजर इज लॉग्ड इन लॉग्ड आउट, ये वेरीफाई करने के लिए बुलियन यूज होता है. और ये मैंने एग्जांपल दिया था, ये था कुछ टाइम पहले. आर यू एलिजिबल फॉर द वोट. तो अगर मुझे कुछ कंपैरिजन करना है, ठीक है, यूजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर ये है, हम लोग करेंगे कल के सेशन में वापस, बट आई एम जस्ट गिविंग यू हेड्स अप कि इफ इट इज ट्रू, if it is eligible for the vote, if this condition, this variable value is true, then only I'll go and perform the next task. Otherwise उसको एंट्री नहीं करने देंगे, ब्लॉक कर देंगे डोर पे ही. ठीक है. सो बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स आर प्लान फॉर यू इन टुमारो सेशन. Be there at live 8 o'clock and we will continue working on it. Okay. Hands on we have already done. So here is the summary what we covered. We learned variables, we learned data types till now, we understood heap and stack. We practiced the typecasting live. हमने किया, आपने भी किया. I want you to write a program. Okay, ये आप खुद करेंगे, typecasting यूज करना है यहाँ पे. So you try it at your side. So this is your task for the day. Assignment आप बोल सकते हो, आपको ये बाद में करना है once you get the time.
Write a program to convert Celsius. We have degree Celsius in India, but we can convert it into the Fahrenheit. ठीक है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर टू यूनिट्स. तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू यूज सम फॉर्मूला. ठीक है, कैलकुलेशन करके उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते, लाइक 37 डिग्री, सॉरी 27 डिग्री इज अराउंड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे कुछ है उसका. तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला आता है, यू विल फाइंड इट ऑन इंटरनेट. एंड वो कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो आप यूज़ करो एंड उसको टाइप कास्ट करके डिग्रीज में लेके आओ. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज योर टास्क. आई शेयर दिस टास्क इन व्हाट्सएप ग्रुप. यू गाइस हैव टू डू इट. और अभी शेयर कर देते ताकि आपको पता चले. दूसरा, अगर आपने कुछ वेरिएबल बनाए तो चेक करो कि वो कौन सा वेरिएबल स्टैक में जा रहा है, कौन सा वेरिएबल हीप में जा रहा है. सो इट इज जस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग, नो इट इज नथिंग टू डू विथ कोडिंग. And since you have started the session, I want you to let people know that you started learning जावा, राइट. जावा इस पे आपने कुछ आज जो नया सीखा. सो यू मस्ट हैव लाइक टाइप कास्टिंग और स्टैक और हिप का. तो गो टू लिंक्डइन, टेल पीपल दैट आई लर्न दिस स्टैक एंड हिप का डिफरेंस एंड दिस इज द डिफरेंस. ओके, जो भी हमने सीखा, यू हैव द नोट्स, यू मस्ट हैव टेकन. अगर नहीं तो सेशन का रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल. यू टेक द नोट्स एंड क्रिएट अ पोस्ट ऑन लिंक्डइन. ठीक है, उससे क्या होगा, पीपल विल अंडरस्टैंड कि यू गाइज आर वर्किंग एंड यू लर्निंग एंड दे विल रीच आउट टू यू कि हमारे कंपनी में ओपनिंग है जावा डेवलपर के लिए, डू यू वांट टू इंटरव्यू. ओके, तो ये सारी चीजें होती है. लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर डूइंग इट ऑलरेडी, सो आपको भी करना है. दैट इज हाउ यू विल ग्रो. ठीक है, यू आर नॉट इन एनी ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आप मैसेज डाल सकते हो, तो यू कैनॉट पोस्ट द कोड इन ग्रुप एज ऑफ नाउ. बाद में हम लोग ग्रुप बनाएंगे तब यू विल बी एडेड इफ वी डू दैट. अगर नहीं तो you have to put all the things whatever I'm asking you to put in WhatsApp. I want you to put it on LinkedIn. Let people know that you are learning. Let people know that you have the skills. ठीक है, so go ahead and do it. About stack and hip और typecasting, जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगा इसमें से, this is very important. I felt you just share it on LinkedIn and this is what you share. Tell the people I learned this. It was really interesting and I felt really happy after understanding this concept and I feel really confident. Happy नहीं, happy बता के क्या ही करेंगे. I felt really confident after learning this concept and I'm ready for my next interview. हाँ, ऐसा टाइप में कुछ तो पोस्ट बना के डालिए. You will get a lot of help. Make use of ChatGPT. उसको बोलो कि ऐसे ऐसे कुछ बताना है so that people will interact with my post. Recruiters will reach out to my profile and then they will give me call for the interview. तो ऐसे करके चैट जीपीटी को बताओ एंड वो टॉपिक पे पोस्ट वो बना के देगा आपको एंड देन यू पोस्ट दैट पोस्ट ऑन लिंक्डइन, यू विल गेट मोर थिंग्स. डोंट फॉरगेट टू tag Tech Amplifiers or me if you are connected. I'll comment on the post, I'll connect, I'll give you the boost. A lot of people will be able to reach out to you then. ठीक है, all right, this is it for today. This is your task. I'm just sharing it into the chat. किधर गया Zoom? नहीं, Zoom तो चालू ही है. ठीक है, सो दिस इज योर टास्क. आई एम जस्ट पुटिंग राइट अ प्रोग्राम. ये कंपलसरी है, आपको करना है. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वेरिएबल्स अगर आपने बनाए तो कौन सा वेरिएबल कहाँ पे स्टोर करेगा एंड पोस्ट, राइट अ लिंक्डइन पोस्ट, राइट अ लिंक्डइन पोस्ट. तो ये दो टास्क है आपके, इट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. गो हेड एंड डू दैट. लेट मी नो, टुमारो वी विल रिविजिट. चलो, all right, any questions, any doubts? I'll be here for next 4 minutes. Anything that you want to ask me by taking the advantage of the moment? तो परेश, what is the time in Canada? अभी आप खत्म करें ना सेशन, तो मेरे को पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइम को एंड करोगे. 9:50 पे, ठीक है, तो 10 बजे आप यू कैन स्लीप ना, सो दैट इज फाइन. तो मीन्स इट इज मैचिंग योर स्केड्यूल ना. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू चेक. ठीक है, सो गुड. तो इट इज फॉलोइंग, मतलब 10 बजे आप सो गए तो मॉर्निंग अराउंड. यस, नो इश्यूज. यस, बोथ क्लासेस वर्क्स फॉर मी. गुड. So Paresh is from Canada, so he wants to learn. He's joining from there, and of course, see, we have arranged the time according to the Indian people, but ये बाकी लोगों को भी help कर रहा है. I'm really happy with it. तो ये सही है. So I would recommend, you suggested you want to join this batch as well.
being part of our existing Spring Boot training as well. So I would recommend, I'll tell the details and everything tomorrow. So be there. I'll share the details how you can be the part of this batch as well. And फिर हम लोग continue करेंगे from next week. ठीक है, this was the demo session today as well. Tomorrow as well there will be a demo session. But tomorrow I'll give you the opportunity. Those who are interested to learn and continue amplifying the skills, I'll be giving you the opportunity. All right, this is it for today. Thank you so much, guys. See you tomorrow at 8 o'clock. If there are no questions, I assume. Hmm? Sure. All right. Bye bye.